एकमेकांसमोर एकमेकांविरोधात उभे टाकले जात आहेत. नाणेफेकीचा कौल गेला तो म्हणजे निरवडे संघाच्या माऊजने आणि कर्णधार सर्वेश नाईकने घेतला निर्णय तो प्रथमतः बॅटिंग करण्याचा. तर पाहूयात काय घडेल काय बिघडेल या सामन्यामध्ये. MSRT तुळस वर्सेस शलकरी टायगर्स निरवडे संघ. आणि जर या संपूर्ण स्पर्धेचं ऑफिशियल पॅनल जर आपण पाहिलं तर दिग्गजांनी भरलेलं हे नाव, जो आवाज संपूर्ण गोवा राज्यामध्ये सध्या गाजतोय असे श्याम कलंगुटकर सर, आणि त्याचबरोबर कॉमेंट्री बॉक्सच्या आत आपण पाहतोय कॉम्प्युटर स्कोरर रखेल परब. आणि जे जे प्रेक्षक या स्पर्धेसाठी या मैदानावर पोहोचू शकत नाही, हे मैदान त्यांच्यापर्यंत पोहोचेल. आणि याचं सौजन्य आहे tenniscricket.in लाईव्ह. या संपूर्ण लाईव्ह स्ट्रीमिंग कंपनीचे सर्व स्वतः गौरव सावंत या स्पर्धेशी जोडले गेले. त्यांच्या समवेत त्यांची पूर्ण टीम, कॅमेरामॅनची मीनल पाटील, विघ्नेश प्रभू आणि त्याचबरोबर तेजस मस्कर. आणि ऑफिशियल्स सुद्धा आपण पाहतोय ते म्हणजे अनुभवी पंच नाना नाईक सर, राजू रेगे सर आणि आप्पी चंद्रोजी सर. आदित्य बेहरे घेऊन येतोय पहिलं षटक. प्रणवीची जोडी आपण पाहतोय गणेश करंगुटकर आणि शरद बांदिवडेकर. पहिलं षटक आपण पाहतोय ते म्हणजे अर्थात अनिवार्य पॉवर प्लेचं, ज्यामध्ये 38 सर्कलच्या बाहेर मात्र 2 खेळाडू आणि ते षटक दिलं जातंय आदित्य बेहरेच्या हातात. पहिला चेंडू स्लोवर 1 ने गेली जाते सुरुवात. रुपेश बेहरे थोडंसं इकडे चकतोय आणि त्यामुळे इकडे आपण पाहतोय म्हणजे पहिला चेंडू निर्धाव गणला जातोय. जर अद्यापर्यंत जर विचार करायला गेला तर या स्पर्धेचे अद्यापर्यंत 2 सामने झालेत. आपण पाहतोय तिसरा सामना. जर 2 मॅचेसचा एव्हरेज टार्गेट पाहिलं तर 50 आकडे जवळपास संघ पोहोचतायत. पण येणाऱ्या कालखंडामध्ये जसा जसा वेळ जाईल अगदी त्याच रीतीने वाऱ्याचा ओघही सुरू होईल आणि अगदी त्याच कारणामुळे बॅटरचा सुद्धा एक चांगला फायदा होऊ शकतो. यावेळेस एक सुंदर स्वीपचा फटका, चेंडू चाललाय लॉंग लेग सीमारेषेजवळ आणि त्याचबरोबर अखेरच्या क्षणी यॉर्करला कन्वर्ट केलं लोवर फुल टॉस मध्ये. पॅडल स्वीपचा एक बाजार फटका आणि लॉंग लेग सीमारेखा उल्लंघन केलं जातंय. चेंडूचं 4 धावांसाठी गणेश करगुटकर ऑफ द मार्क चौकाराच्या सहाय्याने. 4 धावा आहे धावफलकावर. आदित्य बेहरे आपली लाईन चुकतोय आणि त्याला दंडित करतोय गणेश एका चौकाराच्या सहाय्याने. ऑफ साइडला बॉलला कट करण्याचा प्रयत्न होता, ड्राईव्हचा प्रयत्न झाला गणेश कडून, पण चेंडू गेला हा निर्धाव स्वरूपामध्ये. 2 खेळाडू आपण पाहतो सर्कलच्या बाहेर, अर्थात एक खेळाडू डीप मिड विकेटला आणि एक खेळाडू दिसतो तो म्हणजे लॉंग ऑनला पण थोडासा वाईडिश. बाकीचे अन्य खेळाडू 38 सर्कलच्या आतमध्ये. स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न होता यष्ट्यांच्या मागे, चांगलं कार्य सेकंड कीपर च्या भूमिकेमध्ये योगेश नाणोस्कर. योगेश आरोस्कर जोपर्यंत चेंडू करेल फील्ड तोपर्यंत पुन्हा एकदा लेग बाय स्वरूपात दिली जाईल. 1 धाव एकेरी धावेनिशी धावसंख्या परावर्तित, 5 धावा धाव फलकावर. आता स्ट्राईक स्टँडवर येईल शरद बांदिवडेकर. जेव्हा जेव्हा संघाला चांगली सुरुवात हवी असते तेव्हा तेव्हा हे नाव अगदी अग्रस्थानी घेतलं जातं. स्ट्राईक साइडवर सज्ज असेल आणि त्याचा सामना करण्यासाठी. ऑफ साइडला एक सुंदर फटका, आउटफील्डची साथही सुद्धा इकडे लाभते आणि फिल्डर आणि चेंडूची शर्यत जिंकतोय चेंडू. संघाची धावसंख्या 9 वर आणि एक सुंदर फटका आपण पाहिला. अखेरच्या क्षणी चेंडू पर्यंत आपल्यापर्यंत येण्याची वाट पाहिली आणि जेव्हा चेंडू आला अगदी जोरदार चेंडूला ड्राईव्ह केलं स्क्वेअर कटच्या सहाय्याने. चेंडू उल्लंघन करतोय कवच सीमा रेषा आणि मिळतायत पूर्ण 4 धावा. सांघिक धावसंख्या परावर्तित 9 धावा बिनगडी बाद. अशी एक चांगली स्थिती, एक चांगली सुरुवात.
एक सुंदर फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि चेंडू सरळ जो पिकअप केला होता तो पिक आउट केला जातोय सीमा रेषेवरून 6 धावांसाठी. शरद बांदिवडेकरच्या बॅट मधनं एक चौकार एक षटकार. आणि जसं मी म्हटलं होतं जेव्हा जेव्हा निरवडे संघाला चांगली सुरुवात हवी असते तेव्हा तेव्हा एक नाव नेहमी अग्रस्थानी. शरद बांदिवडेकर न्याय करतोय कौतुकाला. जे केलं होतं कॉमेंट्री बॉक्स म्हणून संघाची धावसंख्या झाली आहे ती म्हणजे 15. बिनगडी बाद आदित्य पेहरे थोडासा ठरतो इकडे महागडा पहिल्या षटकामध्ये सांघिक धावसंख्या खर्ची घालू ती म्हणजे 15. अर्थात जर विचार करायला गेला तर एक चांगली रणनीती आपण पाहिली. यानंतर जो सामना असेल तो अर्थात या सामन्यातील विजयी संघ विरुद्ध वेदांत 11 हरमल आरोंदा संघ या दोन संघांच्या माध्यमातून असेल. सामना 5 षटकांचा याची नोंदही आपण घ्या. डू ऑर डाय नॉकआउटचे सामने आपण पाहू. क्वार्टर फायनल पण 5 षटकांचे राहिल्याची सुद्धा नोंद घ्यावी लागेल. नवीन गोलंदाज सज्ज होतोय गंगाराम. गंगाराम पहिला चेंडू वेगवान डाऊन द ग्राउंड खेळण्याचा प्रयत्न होता. एक स्ट्रेट बॅटेड शॉट स्ट्रेट ड्राइव्ह लावण्याचा होता प्रयत्न तो सुद्धा लॉंग ऑफ वरून पण बीट झाला पहिल्या चेंडूवर. गणेश करगुटकर पहिला चेंडू निर्धाव गंगारामच्या करवी दिसतोय. ऑफ साइडला पुन्हा एकदा एक जोरदार फटका लॉफ्टेड ड्राइव्ह पाहायला मिळते आणि चेंडू वन बाउन्स वाढवतोय आमच्या लाईनमनचं काम. चेंडू उल्लंघन करतोय सीमारेषा. 4 धावांसाठी. इकडे सर्वेश नाईकने निर्णय का घेतला टॉस जिंकून बॅटिंग करण्याचा या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं दिली जात आहेत आणि उत्तर देत आहेत ते म्हणजे दोन्ही बॅटर्सचे बॅट. एका बाजूने शरद बांदिवडेकर 2 चेंडू आणि 10 धावा आणि इकडे गणेश करंगुटकर 2 चौकाराच्या सहाय्याने 7 धावांवर 8 धावांवर. स्विच हिट करण्याचा पुन्हा एकदा होता प्रयत्न आणि जर विचार करायला गेला तर समोरच्या संघात सुद्धा तेवढीच फायर पॉवर तेवढीच आक्रमक शैलीची फटकेबाजी. रुपेश बेहरे एक खिलाडी सेना समान. संघाचा कर्णधार विकेट कीपरच्या भूमिकेमध्ये आपण पाहतोय. फील्ड सेट लावतोय कारण माहिती आहे किती खतरनाक ठरू शकतो शरद बांदिवडेकर जर त्याला सेट होण्याची वेळ दिली तर. यॉर्करचा चेंडू पुन्हा एकदा चांगल्या रीतीने खोदून काढलंय. इकडे वारंवार प्रयत्न होते शरद बांदिवडेकरच्या विरोधात यॉर्कर्स टाकण्याचे पण चांगले पिकअप केलेत. एकतर एवढा सुंदर स्ट्रोक होता शरदने खोदून काढला होता पिकअप शॉटच्या मार्फत सरळ षटकारासाठी आणि त्यामुळे एक चांगली धावसंख्या आपण पाहतोय. धावसंख्या 21 21 धावा धावफलकावर. फुलटॉस चेंडूवर इकडे लॉस होईल नुकसान होईल तुळस संघाचं. सेट होण्यासाठी वेळ कशाला हवी. आम्ही पवेलियन पासूनच सेट होऊन आलो याचा निर्वाळा देतात दोन्ही फलंदाज. 4 धावांशी पुन्हा एकदा भर केली जाते गुणतालिकेमध्ये. धावसंख्या परावर्तित 25 25 धावा अवघ्या दुसऱ्या षटकाचा एक चेंडू बाकी असेल. पुन्हा एकदा रिव्हर्स स्वीपचा फटका आपण पाहतोय आणि चेंडू चाललाय आणि चेंडू जात राहील. 4 धावांसाठी पंचांचे हात पुन्हा इकडे एका बाजूने वळतायत कारण त्यांना दर्शवायचे म्हणजे 4 धावा. धावसंख्या बरोबर होईल ती म्हणजे 29 धावा 29 रन्स. नो विकेट डाऊन अशी एक सुस्थिती दिसते ती म्हणजे निरवडे संघाची. जर विचार करायला गेला तर अद्यापर्यंत जी धाव सरासरी राखली जाते ती म्हणजे 29 धावा झालेत म्हणजे 14.5 ची धाव सरासरी 14.5 चे रन रेट म्हणजे अर्थात जर हीच रन रेट जर असंच चालू राहिलं तर अर्थात एक मोठी धावसंख्या पाहायला मिळेल. कारण जर बघायला गेलं तर आउटफील्ड साथ देते त्याचबरोबर अजून थोडीशी गरमी अजून थोडीशी हीट मैदानावर आणि पुन्हा एकदा आपण पाहू विथ ऑन द कार्पेटचे फटके
हे चौकारांसाठी जात असताना. तर आता फील्ड साठी खुलवली जाईल. रुपेश बेहेरे काहीतरी करावं लागेल, कारण जर हे दोन फलंदाज अजून काही वेळ राहिले तर मग नक्कीच एक डोंगरा एवढी धावसंख्या त्यांची वाट पाहिल. पुन्हा एकदा यॉर्कर लाईनचा चेंडू आणि त्याचबरोबर एक सिंगल पुन्हा एकदा मिळेल. एकेरी धावनिशी धावसंख्या परावर्तित केली जाईल, ती म्हणजे 30 धावा. 30 धावाकडे धाव फलकावर झालेत. प्रत्येक षटका जर विश्लेषण जर करायला गेलं तर मोठे फटके हे निघतायत, सिंगल्स डबल्सही जात आहेत. म्हणजे जे डॉट चेंडू निघत नाहीयेत त्याबद्दल विचार करावा लागेल. इकडे दोन्ही फलंदाज जणू सेट झाले. दोन षटक दोन्ही फलंदाजांनी खेळून काढली आहेत आणि अगदी त्याच कारणामुळे एक चांगला पाय रचून दिलाय. कळसारोहण करण्यासाठी सर्वेश नाईक सारखा फलंदाज तर आहे दोन्ही भात्यामध्ये, पण आता विकेटची दरकार असेल. विकेट पाहिजे असेल तुळस संघाला, जर या स्थानावर जर परती करायची आहे तर. पॅडल स्वीप करण्याचा पुन्हा होता प्रयत्न, आणि जर विचार करायला गेला तर आपण जे दृश्य पाहिलं, राजू रेगे अगदी नो काढण्याच्या तयारीमध्ये होते, कारण 3 खेळाडू हे लेग साइडला नक्कीच पाठीमागे होते. पण अखेरच्या क्षणी इकडे रुपेश बेने ते जाणलं आणि तो खेळाडू अगदी फॉरवर्ड दिशेला आणला. एक मोठा फटका बॅक लिफ्ट आणि त्याचबरोबर बॅटच्या स्वीट स्पॉट वर जणू काय चाबूक फिरवलाय गणेश करंगुटकरने नाईकवाड एमसीटी मैदानावर, आणि चेंडू अगदी लांब जाऊन पडतोय, त्रास देतोय आमच्या लाईनमनला. चेंडूची दिशा आणि दशा 6 धावांसाठी मिड विकेटच्या डोक्यावरून धावसंख्या परावर्तित 36 धावा आहे धावफलकावर. आदित्य बेहरेचे स्पेलर दिशा महाग ठरतय. पहिल्या षटकात 14 आणि या षटकात अद्यापपर्यंत 7 धावा. पुन्हा एकदा लेग साइडला, आणि जर आपण पाहिली तर लवचिकता हवी असते अशा प्रकारचे शॉट्स खेळण्यासाठी. आपल्याकडे फ्लेक्झिबिलिटी हवी. ज्या प्रकारचे फटकेकडे खेळतोय गणेश करंगुटकर आणि फिटनेस कडे किती लक्ष दिलाय हे नक्कीच या शॉट्स कडनं आपल्याला कळतंय. धावसंख्या झाली आहे ती 38 धावा, 38. विकेट तर खूप लांबच राहिली. इकडे डॉट बॉल सुद्धा घेण्यामध्ये थोडासा संघर्ष करावा लागतो तुळस संघाला. तुळस संघाकडे जी बॉलिंग लाईनअप आहे त्या बॉल लाईनअपला सुद्धा इकडे नेस्तनाबूत केलं जात आहे गणेश आणि शरद कडून. लेग साइडला पुन्हा मारायचा प्रयत्न होता, पण यष्टींच्या जोपर्यंत चेंडू फील्ड केला जाईल तोपर्यंत एक सिंगल निशी धावसंख्या परावर्तित, ती अर्थात 39 धावांवर. हे स्पेल थोडस महाग. एरवी जर बघायला गेलं तर एक चांगला बॉलिंग लाईनअप आहे हा तुळस संघाचा. भल्या मोठ्या संघांना त्यांनी नेस्तनाबूत करून टाकलं, पण यावेळेस दृश्य काही वेगळं दिसलं. अंतिम चेंडू कशा रीतीने स्पेलचा एंड करेल, कसे रीतीने षटक हे संपेल हे पाहावं लागेल. ऑफ साइडला पुन्हा एकदा बॉलला ड्राईव्ह केलं आणि त्याचबरोबर एक देखण्यालायक फटका. वाचायचं तर कसं वाचायचं, दोन्ही बाजूने धारदार तलवार अगदी वाट पाहत आहेत, आणि यावेळेस तलवार शरद बांदिवडेकरची, आणि 14चा पाडा इकडे आम्हाला दिसतोय. धावसंख्या झाली आहे ती 43 धावा आणि षटक समाप्त झालंय ते अवघे 3. आणि जर हायलाइट्स बघायला मिळाले तर विकेट्स कडे बघू नका, तिकडे तुम्हाला 0 हा अंक दिसेल, पण जर रन्स कडे वाहिलात तर अवघे 43 धावा. 18 चेंडूंच्या नंतर विकेटचा शोध अजूनही सुरू, पण शोध आहे मोठ्या फटक्यांचा कालखंडामध्ये. पुन्हा एकदा घेऊन जातोय ओव्हर टू श्याम कलंगुटकर. Thank you, Deep. After completion of 3 overs, it's 43. 43 without loss.
in a commanding position at the moment. The Shilkari Tigers Nirvade choosing to bat first after winning the toss. And this will be change in bowling. It will be Aditya Naik. Nicely played and gone. Reverse sweep and straight into the hands of Pandurang. Gangaram takes that catch. And after hitting 4 boundaries, a maximum, Ganesh has to head back for 26. It's 43 for 1. The new man in is the main man in, Sarvesh Naik. Nicely played. And we'll get to the mark with that single. The left-hander has come in Goa as the overseas signing. Most of the times we have seen him play in the Goan conditions. Left-arm bowler, left-arm batsman, left-handed batsman. Some different kind of skill set that we have from Sarvesh Naik. 44 for the loss of 1. We are in the 4th over. And this batting of Nirvade. Nicely played in the air and will be a boundary. 1 bounce or throw so 4. Third boundary coming from the bat of Sharad Bandhavdikar. Score moves on to 48. Nicely played over covers. Excellent drive, gorgeous looking hit. Over covers for 4. And with that, 50 up for Shilkari Tigers Nirvade. Nicely played. And will just be a single down to back to square. Looking to cut that one. Missed it completely. Dot ball to end the over after completion of 4. It's 53 for the loss of 1. 53 for 1 after 4 overs. After winning the toss and deciding to bat first, Shilkari Tigers Nirvade.
So change in bowling, it will be Yogesh Aruskar. 53 for the loss of 1 after 4. 2 overs to go in this innings of Nirvade. Let's see if their batsmen can try and get a highest total of the tournament so far. So far 64 is the 63 is the highest total that has been achieved by team from Parsam, KVSC. Starts off with the dot delivery. Just 13 years of age is Yogesh, youngest in the competition so far. Nicely bowled, and will just be a single. Score moves on to 54. Just 13 years of age. It's the beauty of cricket. The youth, the old, the youngsters mixing it up, and experience that we all need, the exposure that you need, you get in these kind of tournaments. Also playing in that DRSC Cup. Took an excellent catch of Rajesh Gosavi. Nicely bowled, just dipping on the batsman at the last occasion. A dot ball. So far has been excellent with his line and length. First a dot, then a single, now again a dot. Swing, missed, slower delivery this time. And will be just a single. Score moves to 55. This is the second last over in progress. In case if you have joined just now, then this is Bar Trophy 2024, organized by the Friends 11 Gaudewada here in Mandram. Winner to take home rupees 2 lakhs plus a trophy. Runners up will get rupees 1 lakh plus trophy. Nicely played in the gap. That's running towards the fence for 4. Cut away nicely. And that will be a boundary. So score moves on to 59 with that boundary. Many exciting prizes to be won. Runners up will get rupees 1 lakh plus trophy. Talking about the semi-finalists, they'll get 20,000 apiece plus trophies. Best batsman, best bowler, man of the series. Man of the match for every game. And also a batsman hitting maximum sixes. Highest number of sixes will get rupees 11,111 rupees. That's it, just giving 6 runs in this over. After completion of 5, it's 59 for the loss of 1. 59 for 1 after 5 overs. Final over coming up. So change in bowling, it will be Yogesh Nerurkar. Nerurkar, after completion of 5, it's 59 for the loss of 1. Shilkari Tigers, Nirvade. Full toss down the ground and taken easily. Aditya Bere takes that catch.
And this time it is the Sarvesh Naik, skipper of the side, heading back to the pavilion. 59 for 2. So brother at the other end, that is Sharad Bandivadekar, and his younger brother Homkar has come out to bat. So both the brothers in the middle. 5 deliveries left in this innings of Shilkari Tigers Nirvade. Let's see if these Tigers can roar in the final 5 deliveries. 59 for the loss of 2. Yes, Yogesh Nerurkar again from the far end. Slower delivery, nicely played. Down at back to the square, will just be a single. Gets off the mark with that single, score moves to 60. So far, this is the highest total of the tournament. Just the third game of this tournament. Almost cruising towards that highest total. 63 was scored by KVSC Parsim. Pulled away, and pulled away with power. That's gone all the way for 6. Half a dozen runs from Sharad Bandivadekar. Score moves to 66, and the individual score of Sharad goes to 36. 13 deliveries, 36 runs. 5 fours and 2 maximums in this innings of 36. Opportunity to get to that half century. Let's see if we can power a few out of the park as well, just like that. Here's Yogesh again. Slower delivery, cut away. This will be runs, more runs. Fast outfield here in Mandrim. And that's gone for 4. That's the 6th boundary. And score moves to 70. He's batting on 40 at the moment of just 14 deliveries. Final 2 deliveries left. Last 2 deliveries. Can he get a 6 and a boundary to get his half century and get his team to 80? Or does he have some other plans of hitting 2 out of the park as well? Oh, good delivery in the air. Chance and taken. Slower delivery, leading edge. And Nehal does the rest. Takes that catch. And Yogesh will have the last laugh. It's 70 for 2, 70 for 3 in fact. He's gone for 40 of just 15 deliveries, 6 boundaries and 2 maximums. So new man in will be Sarvesh Painaik. He'll be at the striking end. Final delivery coming up. 70 on the board, 70 for 3. Full toss delivery. Will just be getting a single. Coming back for the second one. Chance of a run out. Oh, wayward throw. And will be 2 runs and will be run out at the other end. Yes, gone given. So 2 runs to end the innings after completion of 6 overs. 72 for the loss of 4 has been posted by Shilkari Tigers Nirvade after winning the toss and deciding to bat first. Top scored by Sharad Bandivadekar. 40 runs of just 15 deliveries. Was very well supported by Ganesh. Pick of the bowlers for me was Yogesh Aroskar. Bowled a solitary over, just a 1 over, 5 runs and
No wickets. Apart from the others, they all were taken to cleaners. So the target is 73 for the MSRT Turris. Shortly we'll have the run chase and it will be change in voice. It will be T. Parundekar in the commentary box. Winners of this game will play against Vedant 11 Arunda. Requesting the Vedant 11 Arunda, please be ready. धन्यवाद श्याम कलंगुटकर। तो ले चलते फिर एक बार मैच की ओर। प्रतियोगिता का अब तक का हाईएस्ट टीम टोटल भी बन चुका है और हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर कार्ड भी शरद बांदेवडेकर ने जड़ा। इस साल बिल्कुल बढ़िया फॉर्म में और वही फॉर्म इस मैच में भी बरकरार रखा। 40 रन बनाए मात्र 15 गेंदों पर और जीत से पीछे रहेंगे MSRT तुरस। कुल 73 रन जीत से पीछे। आने वाली 36 गेंदों का बचेगा खेल। ओपनिंग बल्लेबाज की हैसियत से जो दो बल्लेबाज अब देख सकते हैं उतर चुके हैं मैदान के अंदर। एक और दिखाई देंगे आदित्य बेहरे और दूसरी ओर संकेत तुरस्कर। तो यहाँ पर बिल्कुल पहली ओवर लेकर आएंगे सर्वेश नाइक करवार की तरह। लेफ्ट आर्म बिल्कुल ये गेंदबाज है तो बिल्कुल इनके सामने बैटिंग करना उतना आसान होगा नहीं, लेकिन फिर भी एक बड़ा टारगेट आपके सामने है तो बड़ी शुरुआत भी देनी पड़ेगी। स्ट्राइकर एंड पर संकेत रहेंगे तैनात और दो खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर, जो कि मयूरेश जामदार दिखाई देते हुए बिल्कुल अपर स्वीपर मिड विकेट पर और वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी सर्वेश नाइक लेकर आएंगे पहली गेंद। पहली गेंद उठाकर खेला, ये गेंद बिल्कुल पड़ेगा सभी फील्डर्स को, क्या रोक पाएंगे? और जी हाँ बिल्कुल गेंद को रोका है वहां। बिल्कुल बढ़िया फील्ड, तीन खिलाड़ी एक सम्मिश्र अटेम्प्ट किया और उसके साथ बिल्कुल अच्छी फील्ड भी की। बिल्कुल वहां पर मयूरेश ने अच्छा कमबैक दिया और उसके साथ अपनी टीम के महत्वपूर्ण रन भी रोके
लेकिन 3 रन तो हालांकि बिल्कुल आसानी के साथ बन जाएंगे और स्कोर बोर्ड जो कि आगे बढ़ेगा। बिल्कुल पहली गेंद पर 3 रन, शॉट तो बिल्कुल बढ़िया था संकेत का, लेकिन शॉट में उतनी ताकत थी नहीं और आउटफील्ड का साथ भी नहीं मिला। अब राइट हैंडेड बल्लेबाज आदित्य बहेरे रहेंगे स्ट्राइकर्स एंड पर, तो फील्ड सेट में किया जाएगा बदलाव। पिंटल बांदेउडेकर जो कि रहेंगे 30 यार्ड सर्कल के बाहर। एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पर और एक खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग पर। डाउन द ग्राउंड ये गेंद गई है, 1 रन आसानी के साथ बनेगा। विद अलोंग द कारपेट को खेला और 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड जो कि बढ़ेगा। इसी के साथ कुल 4 रनों पर गणेश करंगुटकर, इनका भी बिल्कुल एक ओवर आएगा। बिल्कुल 4 के 4 ओवर्स तो बिल्कुल पूरी तरह से पैक है यहाँ पर निरावड़े टीम की ओर से। तो किस गेंदबाज के ऊपर अटैक करे, इस दुविधा में दोनों ही बल्लेबाज रहेंगे। ये फुल टॉस गेंद थी, फील्डर थोड़े से दूर वहां पर, जब तक आएंगे डीप में से तब तक 1 रन बनेगा बिल्कुल आसानी के साथ। सिंगल डबल पर यहाँ पर जोर दे रहे हैं क्योंकि जानते हैं बिल्कुल बड़े शॉट तो लगने चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसी के साथ सिंगल डबल रुकने भी नहीं चाहिए। स्कोरबोर्ड जो किसी के साथ बनेगा कुल 5 रन। 3 गेंदों का खेल शेष रह चुका है अब तक इस ओवर में। बिल्कुल बढ़िया शुरुआत, जिस प्रकार की बैटिंग की शुरुआत की थी गणेश और शरद ने, वही शुरुआत सर्वेश की ओर से। इस बार ये शॉट कड़क है, नीचे खिलाड़ी गणेश और पहली विकेट टीम की ओर, पहली निकल है, जाएंगे बैक टू द पवेलियन। बेरे स्कोरबोर्ड रुका हुआ मात्र 5 रनों पर। नए बल्लेबाज साहिल इस बार उठाकर खेला, नीचे है खिलाड़ी लेकिन थोड़े से दूर रह गए। फिर एक बार दूसरे रन की अपील तो बिल्कुल है, अपने घर तक पहुंच गए नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर संकेत तुरस्कर और स्कोरबोर्ड जो कि बनेगा कुल 7 रन। 7 रन बन चुके हैं अब तक इस ओवर में। अगर बात करें तो एक विकेट भी निकला है। बिल्कुल ऐसा मैंने कहा था, मुश्किल रहेगा सर्वेश नाइक के खिलाफ बड़े शॉट लगाना। तो किस तरीके से करेंगे अपने ओवर का सर्वेश नाइक, ये देखने वाली बात रहेगी। स्ट्राइकर्स एंड पर रहेंगे जो कि नए आए हुए बल्लेबाज। फिर एक बार साहिल, इस बार बिल्कुल गेंद को स्लाइस किया है, ऑफ साइड पर गेंद जाएगी। जब तक फील्ड करेंगे मयूरेश, बढ़िया थ्रो और उसी के साथ शायद ये बिल्कुल चूक गए। अगर थ्रो थोड़ा सा नीचे आता या फिर डायरेक्ट भी तो भी यहाँ पर काम बन जाता, लेकिन यहाँ पर पहली ओवर का खेल हो चुका है समाप्त। पहली ओवर के खेल के बाद स्कोरबोर्ड जो कि बन चुका है कुल 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पीछा किया जा रहा है यहाँ पर 73 रनों का। अभी भी अगर बात की जाए तो बिल्कुल यहाँ पर 64 रन जीत से पीछे आने वाली जो कि 30 गेंदों पर, इसका मतलब बड़े शॉट की दरकार हर ओवर में। और अगर बात की जाए तो टीम की यहाँ पर मशीन गन भी अब तक आने बाकी। रूपेश बहरे अब तक डगआउट में, इसका मतलब अगर एक अच्छा फाउंडेशन दे देते हैं दोनों ही बल्लेबाज तो आने वाले समय में बड़े शॉट लेने के लिए कोई भी दबाव नहीं रहेगा आने वाले बल्लेबाजों पर। लेकिन सवाल ये है कि क्या गणेश करंगुटकर ऐसा होने, क्योंकि इनके हाथ में थमाई है गेंद, सर्वेश नाइक ने दी है जिम्मेदारी दूसरे ओवर की।
पहली गेंद, यहाँ पर एक सिंगल बना। फील्ड साइड में थोड़ा सा बदलाव भी किया जा रहा है। अगर बात की जाए तो निरावड़ी टीम की इस साल बिल्कुल बढ़िया फॉर्म है और उनके बिल्कुल खिलाफ एमएसआरडी तुरस भी, इनका रिदम तो अच्छा है लेकिन इस मैच में अब तक वो दिखाई नहीं दे रहा। डाउन द ग्राउंड, ये शॉट कड़क है, इसी की तो दरकार थी और ये मिलेगी। बिल्कुल एक बढ़िया शॉट डाउन द ग्राउंड, डाउन द लेग साइड पर गेंद यहाँ पर चखाई और सीधा आर्क में साहिल सावंत के बल्ले से निकला है ये चौवा। पूरे गोवा राज्य में एक ऐसी टीम जिसने अपना दबदबा बनाया है, जिस टीम के पास है साहिल वाइंगणकर, उस टीम को यहाँ पर पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया था एमएसआरडी तुरस की इस टीम ने डीआरएससी कप में। लेकिन वही टीम जब थोड़ी सी जूझ रही थी तब एक रिलीवर शॉट निकला। ये तेज गेंद थी, फास्टर वन, क्विकर वन, इस बार गति परिवर्तन किया है, इसीलिए यहाँ पर ये गेंद डॉट करार दी जाएगी। डॉट के साथ स्कोरबोर्ड जो कि रुकेगा मात्र 14 रनों पर। अगर बात की जाए रन रेट की तो हर ओवर में 12 से 14 रन आने मुनासिब अगर ये मैच जीतनी हो तो, क्योंकि पहली 3 ओवर्स में ही लगभग यहाँ पर 43 रन बना दिए थे पहली बैटिंग करते हुए निरवड़ा ने। बड़ा शॉट निकला है, ऊंची के पूरे नंबर मिलेंगे लेकिन दूरी के नहीं, नीचे है खिलाड़ी और सीधा सेफ हैंड्स में सर्वेश नायगोमन कैच नहीं छोड़ते। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर एक और विकेट निकलेगा। ओमकार की बिल्कुल एक बढ़िया कैच हमने देखा, वहां पर बिल्कुल एक बढ़िया पोजीशन में तैनात थे, प्रयास अच्छा था एक बड़े शॉट के साथ इस ओवर को भी बिल्कुल समाप्ति की ओर ले जाने का। लेकिन चौथी गेंद पर एक बड़े शॉट की कोशिश और निकल चुके एक और विकेट, कुल 14 रनों पर। बराबर रहेंगे स्ट्राइकर्स एंड पर। हल्के हाथों से यहाँ पर गेंद को खेला और उसी के साथ ग्रंटिंग साउंड भी सुनाई दिया गणेश के मुंह से। बिल्कुल जब जब गेंदबाज थोड़ा सा ज्यादा जर देता है अपने कंधों पर तो बिल्कुल एक्स्ट्रा प्रेशर भी लगता है। स्कोरबोर्ड जो कि बनेगा कुल 15 रन। थोड़ी सी जूझती हुई यहाँ पर एमएसआरडी तुरस की ये टीम, रन बन नहीं रहे, विकेट्स निरंतर अंतराल पर जा रहे हैं, तो एक बड़े पार्टनरशिप की दरकार रहेगी। सीधा अंपायर के पास और ये यहाँ पर थोड़ी सी मिस फील्डिंग, ये देखने को बहुत ही कम बार मिलता है मयूरेश की ओर से। अक्सर एक बढ़िया फील्डर है, फर्क नहीं पड़ता गेंद कहां पर गई हो, अगर नीचे मयूरेश है तो ड्रॉप की आशाएं समाप्त। इसी के साथ खत्म हो चुका है ये दूसरा ओवर। दूसरे ओवर के खेल के बाद स्कोर बोर्ड जो कि बन चुका है कुल 16 रन। अगर बात की जाए तो इक्वेशन की तो 73 रनों का करना था पीछा और 73 रनों के पीछा करते हुए बिल्कुल यहाँ पर 16 तक ये टीम पहुंची है अब तक। रुपेश बेहरे आने वाले बाकी, इसका मतलब भी बैटिंग लाइनअप में डेप्थ है, लेकिन जो आवश्यकता है तो सिर्फ एक पार्टनरशिप की। अगर एक पार्टनरशिप 25 से 30 रन की बनती है तो बिल्कुल काम आसान बन जाएगा एमएसआरडी तुरस टीम के। लेकिन अगर इसी प्रकार की अगर गेंदबाजी जारी रही तो बिल्कुल काम उतना आसान नहीं रहेगा। नए गेंदबाज रूपेश मयकर रहेंगे अपने बॉलिंग मार्क पर। चौवन रन जीत से पीछे और बिल्कुल यहाँ पर बीट किया है जो खिलाड़ी था 38 सर्कल के अंदर, बिल्कुल वहां पर फाइनल के क्षेत्र में गेंद को भेजा है 4 रनों के लिए। कैच का एक मौका बना था वहां पर। अभिजीत से पीछे कुल यहाँ पर 53 रन रहेंगे। स्कोरबोर्ड बन चुका है 20।
धीरे धीरे गाड़ी चल पड़ी है तुरस टीम की, लेकिन एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि विकेट्स निरंतर अंतराल पर जाए तो यहाँ पर काम मुश्किल बन जाएगा। ये थोड़े से गिर गए, वहां पर आउट करने का मौका ऑन स्ट्राइक एंड पर, और उसी के साथ कोई बैकअप नहीं था, इसीलिए बिल्कुल गेंद को थ्रो नहीं किया। बिल्कुल समझदारी दिखाई सूझबूझ के साथ ये बल्लेबाजी, और बिल्कुल यहाँ पर स्पोर्ट्समैनशिप आप देख सकते हैं शरद बांधे उड़ेकर, तो जो पूरी तरह से गिर गए थे बल्लेबाज, उनको अगर अपना बल्ला दिया। बिल्कुल बैटिंग करते हुए भी अंपायर के निर्णय का यहाँ पर बिल्कुल वो रहा नहीं देखते, अगर कट लगी है तो सीधा चल बनते हैं। बिल्कुल स्पोर्ट्समैनशिप का एक बड़े दायित्व निभाते अपनी टीम के लिए। एक और सिंगल बनता स्कोरबोर्ड जो कि बनेगा, इसी के साथ कुल 21 रनों पर 94 आ रहे हैं, छक्के आने भी बाकी। इस बार रिवर्स स्वीप, गंगाराम ऑटोटेक पंजिम के खिलाफ। बिल्कुल मैंने जिक्र किया था पिछले ओवर में, जिस टीम के पास हो राजेश गोसावी, जिस टीम के पास हो साहिल वांगणकर, उस टीम को किया था नेस्तनाबूद इसी मैदान पर, और उसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा किया था गंगाराम परब ने, और वही रोल आपको फिर एक बार निभाना पड़ेगा, क्योंकि इस बार सामने है 73 रनों का पहाड़। फिर एक बार रिवर्स स्वीप, इस बार मौका शायद दूर रहे, दूर रहे। 2 रन बनेगा, तीसरे रन की कोशिश, हाना बिल्कुल यहाँ पर थोड़े से गैदरिंग में चूक गए, इसीलिए वहां पर अगर बात की तो 28 रन स्कोरबोर्ड पर बनेंगे। ये वो तुड़स के सभी खिलाड़ी, बात की जाए तो 45 रन जीत से पीछे इस मैच में, और गेंदें बची है 20, इजीली अचीवेबल स्कोर है ये तुरस टीम की। अगर बैटिंग की बात की जाए तो आने वाले समय में सर्वेश नाइक की एक ओवर रहेगी, गणेश करंगुटकर की एक ओवर रहेगी। कौन ओवर वो डालेगा ये देखने वाली बात रहेगी। बड़ा शॉट लगाने की कोशिश इस बार, लेकिन रहेंगे नाकामयाब। तो इसी के साथ 3 ओवर्स का खेल हो चुका है समाप्त। गाड़ी बिल्कुल बढ़िया पटरी पर जा रही है, जो एक रिलीवर ओवर चाहिए था वो भी इन्हें मिल चुका है। इस ओवर आने वाले समय में बिल्कुल पीछा अगर किया जाए तो करना पड़ेगा, 73 रनों के बिल्कुल पीछे। 45 रन रहेंगे जीत से पीछे आने वाले समय में, और गेंदें बचेंगी 18। तो सुनते हैं आगे की कहानी फिर एक बार श्याम कलंगुटकर की मुंह जबानी। धन्यवाद।
Vedant 11, Arunda. That's gone through. And a gifted extra run as well. Wide plus a single. Buys in form of buys, yeah. 2 more runs added. Score moves to 31. A wide plus an extra run. Just can't afford to give easy singles like that. Just that the pressure keeps mounting. Whenever you don't get a boundary and singles keep going. Nicely bowled. Straight to the field. A chance of run out. Could be gone. No. Not out, says the umpire. Score moves to 32. Winner of this competition will take home rupees 2 lakhs plus a trophy. Runners up will get rupees 1 lakh plus trophy. Semi-finalists to get rupees 20,000 each plus trophies. Best batsman, best bowler, man of the series, another dot delivery, and many individual prizes to be won. Talking about a batsman hitting highest number of sixes, most number of sixes, will get rupees 11,111 rupees. Sponsored by Sri Bala Naik. And also another wide. Just shuffling across. And bowler missing his line. Just bowling outside that tram line. Talking about the highest wicket take of the tournament. He will also get rupees 11,111 rupees. Again sponsored by Sri Bala Naik. Pulled away. In the air, chance, fielder will have to sit in the dugout to take that catch. That's gone all the way, half a dozen runs. Score moves to 39 with that maximum. Sanket Turaskar with that maximum. Again pulled away, this time behind that man at 45. Is it gone all the way? No. One bounce of the row so far. So dealing in boundaries at the moment is Sanket. Score moves to 43 with that boundary. After completion of 4, it's 43. So 12 deliveries left and 30 runs required to win. So 30 will be required in 2 overs. Requesting the Vedant 11 Arunda, if you can please occupy the dugout. Vedant 11 Arunda, please take the dugout, please be ready. After this game, we'll have your toss and we'll have the game as well. We've got a legend in the scorecard, score department, Akhil Parab. Akhil, good to have you. Score moves to 43 after completion of 4. 43 for the loss of 2, needing another 30 runs to win in 2 overs. Sanket along with Gangaram in the middle. Here's Sarvesh Naik. Starts off with the wide extras. Just 29 in 12. 29 required in 12. Just that Sarvesh needs to get his line right. Mostly a very experienced bowler. Need to get a wicket from somewhere. Swing missed. Taking it away from the right-hander.
missing it completely. Gangaram Parab on strike. Swing missed. Chance of run out at the bowler's end and will be gone. Absolute harakiri this. Trying to get back on strike and sacrificing his wicket for the cause of his team. So that's gone. So Gangaram has to head back for just 8 to his name. It's 43. It's 44. 44 for 3. So new man in is the skipper, Rupesh Behre. Needing another 29 runs. 29 runs required in 11 deliveries. In fact, 10 deliveries. 10 deliveries and needing 29 runs to win. Here's Sarvesh again. Full toss, nicely played. Will just be a single. Mahesh Zamdar doing the work, mopping up on the mid-wicket fence. So the skipper on strike for the first time, Rupesh Behre. No proper connection, chance, oh, just falling short of that fielder. Will be coming back for the second one and it will be easily done. So gets off the mark with a couple, does the skipper Behre. Score moves to 47. 8 deliveries, 26 runs required. Talking to Akhil Parab, computer scorer. We'll get back to that pretty soon. We'll ask him a few questions. Nicely played in the air this time. Fielder. Oh, gone through. Mahesh Zamdar. One of the best fielders on the park and he drops a sitter. That's gone through his hands and with that 50 up for the MSRT Thuras. Score moves on to 51. 51 for 3 after. In fact, still a delivery to go. 7 balls left and 22 runs required. If that was taken, then the skipper would have been back in the hut and would have been a new batsman facing in the middle. But not to be. Gets a boundary on that delivery. Score moves to 51. Needing another 22 runs in 7. In the air this time. Bowler settling under it. Oh, gone through. What is happening out in the middle? First the fielder, now the bowler himself. And you can't blame anyone else for your own doing. A single taken. So it will be 21 runs required in the final over. 21 will be required in the final 6 deliveries. Requesting the Arunda captain, if you can please make your way here. Vedant Levin, Arunda, requesting your entire team to please come and take the dugout as early as possible. So 21 required in the final 6 deliveries. Let's see who comes on to bowl and how does the skipper along with his partner Sanket take the game forward. 6 deliveries left, 21 runs required.
So Omkar will be bowling the final over. 21 runs required in 6 deliveries. Skipper of the batting team, that is MSRT Thuras, Rupesh Bere on strike. His partner at the other end, Sanket Thuraskar. Here's Omkar. Nicely played through the covers. Is he coming back for the second? Oh, fumble from the fielder. Will be 2. Easily done. 19 required now of 5. Is this game heading towards a close finish? 19 gettable, but you never know. Bowlers these days pretty smart. There again, looking for the reverse, missed it completely. So dot delivery. Dot deliveries are like gold dust at this particular stage. 4 deliveries, 19 runs required. What's it gonna be? Does the skipper have enough power to muscle 3 out of the park and take his team home? Nicely bowled, can't do much about it. Will just be a single. So it will be 18 required in the last 3 deliveries. That's big. That's massive. And that's the first one. They need 2 more. So needing another 12 runs in 2 deliveries. Sanket Thuraskar is the lone warrior. He's batting on 28. Won't worry about his personal milestone. He will just look to hit this 2 out of the park and take his team home into the next round. 2 deliveries left, 12 runs required to win. 2 deliveries, 12. Achievable. Slower delivery in the air, fielder. Well, watch it sail over. Another maximum. Is this the flashback of a few games back where Ireland were playing against Afghanistan, needing 3 sixes in 3 deliveries? And the Ireland batsman hit 3 maximums to finish off the game. Is this that same kind of a scenario? 1 delivery left now and 1 6 required. Pressure on the bowler. Well, he had bowled so far a pretty good over. Just conceding 2 sixes back to back and now needing 1 6 to win for the MSRT Thuras. Well, these kind of games, Gaurav Sawant, certainly get the subscribers up and running. The field closing in. 14 balls, 34 runs, 1 delivery left, 6 runs required to win. Sanket on strike. Here's Omkar. Full toss in the air, and is it gone? Yes, it is! What you've seen is absolutely amazing. Well, I hadn't seen it live. Today I witnessed it. 3 maximums to finish off the game. What a game this is. Absolutely love with this game, and what a turn of events in the final 3 deliveries. Sanket is the star of the game. Surely he'll be the man of the match. Sanket Thuraskar.